Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And in the previous class, we have started the numericals, of chapter median from statistics class 11. Okay. Now today we are going to solve the questions that I've already given you as homework and one more question. So each and every concept in detail should be clear to you, like a crystal clear to you. Okay. So let's start here and don't miss the next, you can say the video, because we are going to start a new series, that is the discrete series of the median, okay, and solve more numericals. So just stay tuned with economics at ease, right? So let's start here. Calculate the value of median. The first important thing median में क्या होता है? You need to serial number, ascending or descending, and then the formula, right? So let's start here. This is your question. You can take the screenshot of all the questions, and now I'm going to solve question number 5. Okay, the first one is I'm going to write it in the serial number. Now, serial number is how many? They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right? So I'm going to write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So n would be 10. Then here the values are given. Nothing mentioned, so we are getting the value of median. Okay, the values 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10. तो अब पहले क्या करेंगे? We are going to arrange it in ascending order. It would be easy for us, right? So ascending order में क्या आएगा? 7, okay, then 10, 12, 15. 10, 12, 15. 10, 12, 15. Then 18, 20. आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, आप उसमें से देखिएगा. Then 25, then 38, ascending order, right? 45 and 64. This is individual series of median, right? Now median का formula क्या है? First we need to calculate कि odd है कि even number आ रहा है, right? So ME size of n plus 1 on 2th item. So size of ये क्या है? 10 है, तो 10 plus 1 upon 2 item. So you can write here कितना आ रहा है? 10 plus 1 11 divided by 2, so you will get here 5.5. So 5.5 fifth item ये आ रहा है. That means it is lying between somewhere here the median. अब median मुझे पता पड़ेगा 5.5 है ना, तो यानी कि 6 तक आ नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं है, बट इट इज मोर देन 5 एंड इट्स लाइंग बिटवीन 5 to 6, राइट? ये हमें पता है. So what I'm going to do again here, median is equals to size of fifth item plus size of sixth item, right? जो भी इसमें वैल्यूज गिवन है वो हम पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से. सो ये साइज क्या है इसका? यहाँ पे साइज वैल्यू गिवन ऑन द फिफ्थ सीरियल नंबर, इट्स 18 plus 20 divided by 2. So you will get how much? 19. Okay, 18 plus 20, you will get 38 divided by 2. That means median is 19. Median is equals to 19. Okay, value of median 19. This is your answer. Okay, so odd or even का भी करना जरूरी है. Now this is your sixth question. We are going to start solving here. Question number 6. Students 10 है, यानी कि serial number आपका 10 हो गया, right? And इसको आप arrange करेंगे ascending order में. Now let's see how you're going to solve that. Question number 6. आपको पता है, you know serial number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So n is equals to number of items 10, right? Now arrange it in the
वैल्यूज उसमें मार्क्स ऑब्टेन थे। अब इसको आप अरेंज करिए। यू हैव द स्क्रीनशॉट। आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रॉल अगेन एंड अगेन। देखो 11 से स्टार्ट हो रहा है सबसे छोटा नंबर, 11, 12, 14, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35 and 41. Okay, now I'm going to write the formula. Median is equals to size of n plus 1 upon 2th item, size of कितने हैं ये, 10 है, 10 plus 1 upon 2th item, कौन सा नंबर आ जाएगा आपका, 5.5, 5.5 आइटम। सेम उसी तरह का निकला ना, 11 डिवाइड बाई 2 तो 5.5 आ गया, ये इस तरह आया था, हमेशा इसको बताते। नाउ अगेन यू हैव 5.5 इज मीन्स 5 and 6। ठीक है, ये आपके आ रहे हैं मीडियन, इन दोनों में से हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब इससे ही हमें पता चलता है कि हमें जो है कौन सा फॉर्मूला आगे आगे अप्लाई करना है। सेकंड इसका फॉर्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ किसका है, पहले 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम, जो भी है इसका साइज गिवन है वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 22 plus 26, so you will get 48 divided by 2, that means 24 marks। मीडियन क्या होगा आपका, 24 मार्क्स। अब देखो यूं तो मीडियन कहीं पे कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये क्या होता है जब ये इस तरह की सीरीज में आ जाएगा, इस तरह के आइटम्स में आ जाएगा सेकंड वाले में, तो फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने ये लिखा हुआ है। दैट वॉज नॉट ए न्यू होमवर्क, बट मैं चाह रही हूँ हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके लिए। 7 employees at a serial number and you have to arrange. Okay, take the screenshot and then let's start. Serial number, you know, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And learners, please, I would like to just let you know again a gentle reminder that microeconomics and macroeconomics playlist is already updated. So just visit Economics at Ease, okay? So you can understand micro and macro clearly and easy. It would be very easy for you. Okay, all the chapters, theory plus numericals, all are done. Okay, all are already updated, and statistics we are doing. And for class 10th, ICSC final accounts, the playlist is already means updated for the final accounts. So please just go through that also. And don't miss the next video because we are going to solve more numericals on median. That is the discrete series. Okay, this is individual series, and the next video we are going to start the discrete series. So this is here. Okay, serial number 7 tha. So n is equals to 7. Okay, then we have to arrange wages. Wages in ascending order we are arranging. हमेशा ascending order आसान रहता है. That's why we always opt for this. Okay, so it would be 375 here, the lowest value, then 400, then 450, then 490, then 500, then 520, and then last is 550. देखो यही तो था, सेम पैटर्न ना। सिंपल, पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन। सो मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू size of n plus 1 upon 2th
item is equals to size of कितना है 7 + 1 upon item, तो मैं रफ में लिख दूंगी 7 + 1 कितना होता है 8, सो इट मीन्स फोर्थ आइटम। अब इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना, सिंपल था ये तो। ओके, सो दिस इज फोर्थ item, but median is equals to 490 wages। ये रुपीज में होगा ना, वेजेस तो रुपीज में दी जाती है, रुपीज 490 wages। Okay, I hope it's quite clear now. Okay, this is the end of the individual series. We have done 7 questions on individual series, okay, of median. Next, I'm going to start the discrete series. So stay tuned and keep watching Economic Cities. Thank you.